guys, it's me Simi and welcome to another super exciting episode of La Maison L'Oréal Paris, your one stop for everything related to makeup. So don't forget to subscribe to our channel for more such makeup tips and tricks. And जब आप subscribe कर ही रहे हैं तो hit on the notification bell which is right next to it so that you are notified and updated every time we upload a new video. So with the whole social distancing happening, we have a lot of time on our hands. तो मैंने सोचा क्यों ना बैठ के थोड़ा मेकअप किया जाए. And in this video, I'm actually gonna show you a simple makeup tutorial for beginners. तो before I start with the video, अगर आपके पास कोई भी questions हैं जो आप मुझे पूछना चाहते हैं related to makeup, जिससे कि आपकी life थोड़ी आसान हो जाए, तो please ask them in the comment section below, and I would love to answer those for you. And चलिए शुरू करते हैं आज का video. Okay, so let's begin. So the first step is actually a concealer. So for that I'm using the L'Oréal Paris Infallible Full Wear Concealer in the shade Amber. Now this concealer is also like a corrector, so I'm using it underneath my foundation. आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग फाउंडेशन के ऊपर भी कंसीलर यूज़ करते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, बट बिकॉज ये कंसीलर के अंदर लिटिल बिट करेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, तो इसलिए मैं इसको फाउंडेशन के अंदर यूज़ कर रही हूँ, लाइक फाउंडेशन से पहले. एंड इसको मैं अपने फिंगर पे लेके अपने अंडर आइज के नीचे डॉट कर रही हूँ. अपने ब्लेमिशेस, एक्ने स्पॉट्स, स्कार्स, पिगमेंटेशन, जो भी आपके फेस पे से कोई प्रॉब्लम एरिया है, आप उसके ऊपर इसको टैप करें सो दैट आपके फेस के ऊपर एक इवन टोन आ जाए. एंड जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो उसके अंदर से आपके पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स या एक्ने स्कार्स शो नहीं करेंगे. सो बिकॉज ये कंसीलर एक्चुअली फुल कवरेज कंसीलर, सो आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली थोड़ा सा प्रोडक्ट आपके स्कार्स और आपके पिगमेंटेशन को आसानी से कवर कर देगा. So once I've applied the product, I'm going to use my Damp Beauty blender and I'm going to just push that product into my skin. Like that. You want to use dabbing motions. Like I always say, just dab the product, press it into your skin and make sure you conceal and cover all of your spots because we're not going to be correcting or concealing later on. So this is it. So आपने देखा होगा कि मैं यूजुअली फाउंडेशन के बाद में कंसीलर लगाती हूँ, बट आज मैं पहले लगा रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप इस कंसीलर को एक करेक्टर के जैसे भी यूज़ कर सकते हो. एंड करेक्टर का काम बेसिकली आपके स्किन को इवन करने का होता है, लाइक आपकी स्किन टोन को इवन करने का होता है. जैसे कि कभी कभार हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, थोड़ी स्किन टोन अनइवन होती है, जैसे कि मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है और डार्क सर्कल्स हैं, तो उसको इवन आउट करने के लिए हमें करेक्टर यूज़ करना पड़ता है बिफोर आवर फाउंडेशन एंड आवर कंसीलर. बट इस कंसीलर की बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें करेक्टर ऑलरेडी है, सो यू डोंट हैव टू यूज़ अ करेक्टर सेपरेटली. एंड इसलिए मैं इसको एक्चुअली फाउंडेशन के पहले यूज़ कर रही हूँ आज. नाउ द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये कंसीलर फुल कवरेज है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि थोड़े से प्रोडक्ट से ही आपके स्कार्स और आपके मार्क्स ईजीली कवर हो जाएंगे. सो अगर आपने कभी कंसीलर नहीं खरीदा है और आपको पता नहीं है कि कंसीलर कैसे खरीदते हैं, लाइक योर परफेक्ट शेड ऑफ कंसीलर, देन ऑलवेज गो फॉर द कंसीलर विच इज़ क्लोजेस्ट टू योर स्किन टोन, जो कि आपके स्किन को प्रॉपरली मैच करे, जिससे कि आप अपने स्कार्स, आपकी अनइवन स्किन टोन, आपके डार्क सर्कल्स को ईजिली हाइड कर सकते हैं. सो दैट अगर आपको फाउंडेशन भी यूज़ करने का मन नहीं है, किसी दिन आपको लाइट और नेचुरल मेकअप रखना है, सो देन यू कैन जस्ट यूज़ दैट कंसीलर एंड यू नो जस्ट कवर योर डार्क सर्कल्स, कवर योर स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस, acne scars etc. and that's it, you'll be sorted. So अब अपने स्किन टोन से एकदम क्लोजेस्ट मिलता जुलता कंसीलर शेड आप खरीद सकते हैं. So in case if you want to know how to pick the correct shade of foundation for yourself, click on the link right here, and that video is going to be very helpful for you. And now moving on to the foundation. So I'm using the L'Oréal Paris Infallible Pro Matte Foundation and I'm in the shade 106 Sun Beige. So I'm going to take a little bit on the back of my hand, just 2 drop. And that is it. And I'm going to dip my beauty blender directly into it. You guys can also dot the foundation all over your face before you start blending it. Okay, and I'm going to just start bouncing that all over my face. Now when you're using a beauty blender, use this side of the blender, like the back side of the blender, to apply the foundation over your face. And then you want to switch to this side when you're applying it underneath your eyes. So if you're using a beauty blender to blend the foundation on your face, make sure the blender is damp. And damp करने के लिए आप इसको पानी में अच्छे से डिप कर लें और इसका एक्सेस पानी निकाल दें. बिकॉज अगर आप इसका एक्सेस पानी नहीं निकालेंगे तो आपका फाउंडेशन एक्चुअली सेपरेट हो जाएगा, उसमें काफ़ी क्रैक्स आएंगे एंड दैट विल नॉट लास्ट लॉन्ग. सो
एक और तरीका है जिससे कि आप एक्सेस पानी निकाल सकते हैं। आप एक कपड़ा ले लीजिए और अपने ब्यूटी ब्लेंडर को उसमें स्क्वीज़ कर लें, सो दैट all the excess water that your blender has will just get transferred into the cloth, and then you can use your blender for the foundation application. And make sure कि आप अपना फाउंडेशन थोड़ा सा अपने नेक पे भी लगा लें, सो दैट आपके फेस और आपके नेक में डिफरेंट स्किन टोन्स या डिफरेंट टोन्स ना दिखाई दे. So make sure you even everything out properly. So with that, I'm somewhat done with my base, and now moving on to the eyes. So I'm going to be doing a wing liner today, and for that I have the L'Oreal Paris Matte Signature Eyeliner. Now मुझे पता है कि काफ़ी लड़कियों को wing eyeliner करने से काफ़ी डर लगता है क्योंकि थोड़ा सा intimidating है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है, बट मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स शेयर करूँगी जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए. एंड ये प्रोडक्ट एक्चुअली काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली है क्योंकि इसकी जो स्टेम है ये एक्चुअली ग्रिप के साथ आती है, सो दैट व्हेन यू अप्लाई द प्रोडक्ट your hands don't slip while you're applying it, and you get a perfect grip to the stem while you're holding it. And it's also kind of perfect if you live in humid conditions like Bombay, so it just doesn't go anywhere once you apply it. So let me show you how to apply it. Okay, so first I'm going to show you how to do the normal eyeliner. So I'm going to start from the inner corner of my eye and keep your brush as close as you can to the lash line. You want to make sure that there are no gaps or like no like streak marks or anything while you're applying the eyeliner. It has to be like very even while you're doing that, and you guys can actually take your time to do this because this is quite tricky. And just make sure that your hands are like steady while you're doing that so that the line is not crooked, and just take it all the way towards the end of your eye. And now if you want to do a wing liner, I'm gonna actually start from the outer corner of my eye, like जो आपके lower lash line की जो end है, जो आपके eyes की corner है, उसकी natural line को आप follow करें and look straight into the mirror like that, so that just actually gives you a perfect angle. And I'm gonna start from the bottom part like that, right from the corner of my eye, and you wanna keep your hand really steady while you do this, and just make like a small line like that, like an angled line going upwards towards your eyebrow. As you can see, I mean, it's kind of like going towards my brow, and that's how you make your perfect wing. And once you have your line in place, आप उसको अपने लाइनर के साथ जो आपने पहले ड्रॉ किया था उसके साथ कनेक्ट कर लें. And I'm going to repeat that on the other eye as well. So in case if you're finding it difficult to do the wing eyeliner, I have shared quite a few hacks in this video right here, so go click on the link and check out the video. Okay, and now to finish off with the eye look, I'm going to use a mascara because mascaras actually help in completing your eye look, and it also helps in opening up your eye a lot more. So I'm going to be using the L'Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Mascara. So before I apply the mascara, I'm going to take a spoolie, which is a brush like this, एंड इससे मैं अपनी लैशेस को पहले क्लीन कर लूँगी सो दैट प्रोडक्ट बिल्डअप ना हो मेरे आईज पे, मेरे आई लैशेस पे, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प इन सेपरेटिंग योर लैशेस बिफोर यू अप्लाई योर मस्कारा. So I'm going to take the wand and I'm going to start applying it right at the roots like that. और आप इसको विगल करें अपने ब्रश को थोड़ा सा ऐसे, और इसको अपने पूरे लैशेस पे अच्छे से लगा दें जिससे कि आपके लैशेस काफ़ी ज़्यादा थिक, डेंस और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी मिलेगी आपके लैशेस को. एंड आई एम गोना डू द सेम ऑन द अदर आई एज वेल, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स, टेकिंग इट ऑल द वे इनवर्ड्स. एंड नाउ यू वांट टू कोट योर बॉटम लैशेस एज वेल. And yeah, so with that, as you can see, mascaras actually add a lot more definition to your eyes, and they just kind of complete your eye look. Okay, so I'd like to give you guys a pro tip while you're using a mascara. Just take the wand out like that once and then swirl it around so that
your wand can actually get coated with all of the mascara that you need, with all of the product, and then start with the application. Don't go back in again and again like that. ऐसे करने से आपके मस्कारा के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर फिल हो जाएगी, जिससे कि आपका मस्कारा काफ़ी क्लम्पी हो जाएगा और बहुत जल्दी ड्राई आउट भी हो जाएगा. So don't do that. Just take your mascara wand out like that once, swirl it around, and then start with the application. Okay, and now moving on to my favorite part of makeup tutorial, which is a blush. Now I am using the L'Oreal Paris La Bar blush in the shade Play With Me, which is a nice peachy soft nude color. And the best way to actually figure out your shade of blush would be to pinch your cheeks like that, and just थोड़ा सा pinch कर लें अपनी cheeks को ऐसे, और जो भी shade आपके cheeks पे आ रहा है, that is the closest shade of blush that you should go for. So in case if you fall in a fair category, you want to go for something which is in the pinky tones, and if you fall in a medium to deep skin tone, then you want to go for something peachy, something nude, and if you fall in deep dark skin tone, then you can go for an apricot shade. Now you want to make sure that you use a fluffy brush like this, so that it's easier when you're applying the blush on your cheeks. And just smile a little so that you can actually see the apples of your cheeks, and this is where you want to apply the brush. And I'm just gonna dab the blush onto the apples of my cheeks like that, and just diffuse it all the way backwards. So can you see how easy it is to actually blend your blush with a fluffy brush like this? Because if you use a tighter brush, if you use something which is very very dense, then you will end up picking up a lot of product, and उससे आपका product actually एक ही जगह पे stuck हो जाएगा और आप उसको move नहीं कर पाओगे, और वो बहुत ज़्यादा patchy लगेगा. So make sure if you're applying blush, you want to use something which is very very soft and very very fluffy like this, जिससे कि आप अपने product को easily diffuse और move around कर पाएं. And I'm gonna apply a little bit on my chin as well, just a little bit. Okay, and now to finish off with my makeup look, I'm going to use a lipstick, and you want to go for something which is matte, which is like long lasting. So for that, I'm going to be using the L'Oreal Paris Roots Signature Liquid Matte Lipstick. Now the best part about this lipstick is that you don't really have to additionally exfoliate your lips, because कभी-कभी हमारे lips chapped होते हैं, dry होते हैं, तो lipstick लगाने के बाद वो और भी ज़्यादा weird और off लगता है. तो इस लिपस्टिक के साथ एक्चुअली आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट और हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि इट कम्स विद एन ऑयल बेस्ड फॉर्मूला, सो इट स्टॉप्स योर लिप्स फ्रॉम फ्लेकिंग आउट, and also it lasts much longer than a lot of other liquid lipsticks, and it's very very lightweight. The best part about this wand is that you can use it to line your lips first, and then you can just fill it in. And I'm going to start from the center of my lips, basically from the cupid's bow. You want to make like this small cross on your cupid's bow like that, and then you want to just take it all the way towards the end of your lip. And that's it. So once you've lined your lips, I'm gonna just fill it in. Okay you guys, so this is it. This was basically the simplest look that I've created so far. I hope you guys enjoyed today's video, and अगर आपके पास कोई और techniques या tips हैं जो आप मेरे साथ share करना चाहते हैं, then please post them down in the comment section below, and maybe we will try it out together in the next episode. And all the products that I've used in today's video are mentioned in the description box below. And before you leave, don't forget to subscribe to our channel and also hit on the bell icon so that you are notified and updated every time we upload a new video on La Maison L'Oreal Paris. And with that, it's a wrap. I'll see you next time. Bye. Hi guys, I hope you're staying home and staying safe. I'm proud to share that L'Oreal India has taken a step towards helping our country in this time of need through their initiative called L'Oreal India Gives Back. Click the link in the description box to know more about it.